So magnetic material are those materials which are attracted towards a magnet. What is induced magnetism? When you bring a magnet closer to a magnetic material, the magnetic poles are induced in it. This is called as induced magnetism. And you can clearly see कि ये जो iron nails है, iron nails पे एक end पे south pole है, and on the other end we have a north pole. So the south pole of the iron nail will be attracted towards the north pole of the magnet. Okay. Acha. Next up, we talked about the difference between iron and the steel magnets. Iron magnets are temporary magnets, whereas steel magnets are permanent magnets. जो iron magnets हैं, they will not retain their magnetism for a longer time, whereas जो steel magnets हैं, they keep their magnetism for a very longer period of time. Iron magnets can be easily magnetized and demagnetized, whereas steel magnets are hard to demagnetize. Iron magnets are stronger compared to the steel magnets. Okay, then we talked about the electrical method of the magnetization, or we call it a solenoid, or we also call it an electromagnet. So you can see कि ये जो solenoid है, हम solenoid के around एक coil की winding कर देते हैं, ठीक है? And we connect it to a battery and a switch. When you will turn on the switch, so what will happen as the current passes through the coil? So the solenoid and the iron rod inside, they are strongly magnetized. इधर ये keyword है कि when you pass the DC current, तो जो आपके पास solenoid and the iron rod inside the solenoid is strongly magnetized. Okay? Acha. Now the magnetic poles are produced at the ends of the solenoid. How to determine that? Using right hand grip rule. तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो तो राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है थंब पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और जो फिंगर का कर्ल है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो सिंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डाउनवर्ड्स, तो अगर आप इसको ग्रिप करोगे तो यू विल सी के जो थंब है वो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, which means कि right side पे we will have a north pole and on the left we will have a south pole. Now please remember कि जो magnetic field lines हैं, they will always travel from north towards the south pole outside the solenoid, and inside the solenoid the magnetic field lines will travel from south towards north pole. तो 1 mark आपसे वो ये एग्जाम में पूछेगा to mark the magnetic poles at the edges of solenoid. दूसरा आपसे ये पूछेगा draw the magnetic field lines outside and inside the solenoid. So 2 marks for that as well. Okay. Now next up, we talked about कि जो like poles हैं, they always repel, and जो unlike poles हैं, they will always attract. Now please remember what is a magnetic field. Magnetic field is a region around a magnet. If you are going to place another magnet inside that region, so that magnet will experience a force of attraction or repulsion. This is called as magnetic field. Now the field lines are always traveling from north towards south. Field lines always leave the north pole and they are always entering into the south pole. So you can see दरमियान में जो field lines हैं, they are always uniform, but at the edges, the field lines are concentric or curved. Or if you place 2 like poles, so they repel, और center में एक region produce होता है, which is a neutral point, or which is a no force region. By no force region, it means that if you place another magnet inside the region, so it will experience no force of attraction or repulsion. अच्छा, ये एग्जाम में आपसे 4 मार्क का ये पूछेगा कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट एंड यू विल राइट कि यू मे ड्रॉ डायग्राम. बेटा यू मस्ट ड्रॉ डायग्राम. ओके,
So हमें diagram जरूर बनानी है. In case if you skip any of the point, you will still get a mark for that if you have drawn the correct diagram. So we take this bar magnet, we place a compass next to it. जो plotting compass की needle है, it is made from steel. So this dot end of the compass is the south pole and this arrowhead of the compass is its north pole. So the south pole of the compass is attracted towards the north pole. So, and जहां पे आपका arrowhead point करेगा, we will mark a dot over there. Then place the compass next to the dot and again where the arrowhead points, place a dot. So you have to keep repeating until you reach the other end of the bar magnet. And this plotting compass will move according to the magnetic field lines. और ये जो plotting compass है, it will align according to the magnetic field lines. At the end, we join the dots together. That will give us the direction of magnetic field lines. Place compass at one end of magnet, south pole of compass attracted towards the north pole of magnet. Mark a dot where arrowhead points, place compass next to the dot and mark another dot where the arrow points. Compass moves along the magnetic field lines. Repeat until you reach other end of the magnet and join the dots together. Then we talked about the electric bell. Electric bell key diagram will be given to us in the exam. We just need to know okay, how it works. So this is an electromagnet. Electromagnet is made from iron. Electromagnet के around हमने copper के coils की winding की हुई है. This is the bell button. This is the battery or a DC supply. When you press the bell button, so the path for the DC current is complete. So the current flows through the electromagnet. What will happen? The electromagnet is strongly magnetized. So strongly magnetized होने का मतलब ये है कि magnetic poles are produced at the ends of the electromagnet. Now we use the right hand grip rule to determine the direction of the magnetic poles. Okay. Now, beta, we have an iron armature in front. अच्छा, अब आपके पास electromagnet में भी magnetic poles induced हुए हैं. So will the magnetic poles induced on the iron armature as well. So this iron armature is attracted towards the electromagnet and the hammer will move and it hits the gong and the bell starts ringing. So this is how it works. So इसमें keywords हमें क्या याद होने चाहिए कि electromagnet is strongly magnetized when the DC current flows through it. Iron armature is attracted towards the electromagnet because magnetism is induced in it. Hammer hits the gong, bell starts to ring. Acha, when this iron armature moves to the left, so it breaks its contact with the contact screw, which means that the path for the current is disrupted. Agar current will stop flowing, the electromagnet is instantly demagnetized. Iron armature moves to the right and the hammer moves away from the gong and the bell will stop ringing. I hope it's clear to everyone. Magnetic relay. Magnetic relay की diagram हमें पता होनी चाहिए. So what is the purpose of a magnetic relay or a reed relay? It's the same. To control an output circuit which operates at high current through an input circuit which works at low current. Okay? So we have an electromagnet और इसके around ये coil of wire की winding हुई हुई है. ठीक है? So we pass the DC current through the coil. Now what happens? Magnetic poles are induced at the edges. Achha, this is an iron armature which is pivoted at this point. इसका एक end जो है, it's hanging freely and the other end is laying on the top. Now, when the magnetic poles are induced,
on the electromagnet. It attracts the iron armature. The other end of the armature is lifted up, and these contacts will join, and the path for the output current is complete, and this motor will start working. When you turn off this switch, this electromagnet is instantly demagnetized. Armature moves away towards its original position, and the other end is just moves down. These contacts are moved away, and the motor will stop working. Okay, so keywords क्या है? Keywords है कि electromagnet is strongly magnetized. Okay, what else? कि electromagnet strongly magnetized हो जाता है, और उसकी वजह से iron armature is attracted towards the electromagnet. The other end of the armature is lifted up, and those contacts, they just join, and they complete the path for the output current, and the motor will start to work. Okay, now let's talk about a reed relay. So reed relay has the same function. Okay, so reed relay and magnetic relay, they both are used to control an output circuit which works at high current through an input circuit which works at low current. To control output circuit working at high current through input circuit working at low current. Okay, so again reed relay की भी diagram हमें पता होनी चाहिए. So we have a solenoid, or we also call it electromagnet. So this is a solenoid or an electromagnet which is made from iron. Okay, it's made of iron. Is solenoid के around we are going to do winding. So ये जो coils हैं, these coils are made from copper. So we have a DC source. So let's say we have a battery, and this is a switch. So this is a battery. Let's say 9 volts, 12 volts. That's up to you. And we have this switch. Okay. Now we have reeds inside. So these are ये जो iron reeds है, so these are two iron reeds. This is, we have a motor. This is the symbol for motor. And so जो green वाला है, this is our output circuit. Okay, this one is output circuit. Okay, and I also had to place an AC source in it. So this is an AC source. Yeah, so we have this output circuit, and this one is an input circuit. Okay, beta, the moment we will turn on this switch, तो उससे ये होगा कि the current will start to flow. This is the positive, this is the negative. The current flows through the coils, और उससे ये है कि electromagnet is strongly magnetized. Using the right hand grip rule, we can say that at this end of the electromagnet, we will have a north pole, and on the other hand, we will have a south pole. अच्छा, ये जो inside में
These are basically the iron reeds. These are what? These are the iron reeds. Okay. Acha. Beta, when you pass the DC current through the input circuit, both electromagnet and the iron reeds are strongly magnetized. So let's just write here, when DC current passed through electromagnet, both iron reeds and electromagnet is strongly magnetized. So मैंने आपसे यही कहा था बेटा, यही keywords है कि आपके पास when you will pass the DC current, iron reeds and the electromagnet is strongly magnetized. अब when these iron reeds are strongly magnetized, ये जो दोनों rods नजर आ रही हैं, these iron reeds attract. Iron reeds attract and join together. And join. जब ये attract करेंगी and when they will join together, so the path for the output current is complete and the motor will start working. Okay? Iron reeds attract and join. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि the path for output circuit current is complete and motor is turned on. अच्छा, now why can't we use मतलब स्टील का इलेक्ट्रोमैग्नेट या हम स्टील की रीड्स क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज इवन इफ आई टर्न ऑफ द स्विच, तो जो स्टील होता है, स्टील रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो जिसकी वजह से even if I turn off the switch, so the output circuit will continue to work. And this is what मतलब this is not what we want. We want कि जैसे ही हम अपना input circuit का complete करें, input circuit का switch on करें, तो आपके पास output circuit भी start हो जाए. जैसे मैं input circuit का switch off करूं, तो output circuit भी it just stops working. So basically, it is acting as a switch. Okay, now let's just, so iski bhi diagram हमें मतलब पता हो. Okay, now let's just talk about a circuit breaker. Now please beta, just remember one thing I've already told you guys this thing कि अगर if anybody has any confusion, तो आप मुझे message drop कर दो, ठीक है? So I'll respond back to your QTs through that. Okay, now let's just talk about the circuit breaker. Okay, so circuit breaker Acha, so what is basically the purpose of a circuit breaker? So beta, the purpose of a circuit breaker is in case of the excess current, the circuit breaker just turns off or it disconnects the electronic appliance from the main voltage supply. So this is exactly the same function performed by a fuse as well. Okay? So a circuit breaker has the same function as are the fuse. So let's say we have this electromagnet.
Okay, so this is the diagram. We have an iron core inside this electromagnet. So this is an iron core. Now what is this? This is an iron armature. Iron armature. Okay. This is basically the terminal 1 which is connected to the main supply. जहाँ से voltage हमारे पास input में आ रही है. Terminal 1 connected to mains supply. Now this is the terminal 2. This terminal 2 is connected to the electronic appliance. Okay. So जो terminal 2 है, terminal 2 is connected to the electrical appliance. Okay. Okay. And this is a springy copper strip. Springy copper strip. Okay. अच्छा. So basically what is happening, अब आपके पास terminal 1 से current आ रहा है. It flows through the springy copper strip into the iron armature, and into the iron armature it travels through this electromagnet, and then it goes towards the terminal 2. Okay, so this is actually the electromagnet. This is your electromagnet. So we can say कि जो current है, current travels from terminal 1. Terminal 1 से current travel कर रहा है towards springy copper strip. Springy copper strip. Springy copper strip से होके it goes into the iron armature. Iron armature से होके it goes into the solenoid. और solenoid से होके it goes towards the terminal 2. So this is actually the path for the current, okay, how it is traveling. Acha, when there is normal current, so you can see that there is an iron core which is placed inside the solenoid. Okay. So when there is normal current, so this iron core is not strongly magnetized. It is magnetized, but it's not strong enough to attract the iron armature towards it. Okay. So in case of normal current, so let me just write it down as well. In case of normal current, iron core is magnetized but not strong enough to attract iron armature. Okay. So this iron core is not strongly magnetized to attract the iron armature. Now what happens? Main working हमारी यहाँ से start होती है. So we say that in case of excess current, फिर वही बात आ गई कि iron core inside solenoid is strongly magnetized.
is strongly magnetized. मैंने यही बार बार मैंने बेटा बात की थी कि these are the key words. अब ये iron core is strongly magnetized. इससे क्या होगा? Iron armature is attracted towards iron core. Iron armature is attracted towards iron core. अब देखो बेटा, जब ये आयरन कोर जो है ना ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसका ये एंड पिवटेड है। जब ये आयरन कोर जो है ये स्लाइटली इस तरफ मूव करेगी, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू, सो ये आयरन कोर जब ये इधर मूव करेगी तो उससे ये होगा कि आपके पास जो कॉपर स्ट्रिप है वो ब्रेक कर देगा अपना कनेक्शन विद द आयरन आर्मेचर। ओके, जिससे ये कि जो करंट को पाथ मिल रहा था टू फ्लो, दैट विल इमीडिएटली स्टॉप। सो वी कैन से कि स्प्रिंगी copper strip breaks connections with iron armature. So you can see कि जो आपके पास कॉपर की स्ट्रिप है वो ब्रेक कर लेगी अपना कनेक्शन और वो ये इस तरह से हवा में चली गई, ठीक है, hence stopping the flow of current to the appliance, hence flow of current to terminal 2 is stopped. So this is how the circuit breaker works. अच्छा, एग्जाम में आपसे वो ये भी पूछता होता है कि state the differences between us, मतलब state the advantages of circuit breaker over a fuse. दोनों का पर्पस सेम है, ठीक है। फ्यूज कैसे वर्क करता था? फ्यूज इस तरह से वर्क करता है कि व्हेन देयर इज एक्सेस करंट तो जो फ्यूज होता था इट जस्ट मेल्ट्स। So when it melts, so it breaks the connection of main supply from the electrical appliance. Okay? अच्छा, so अब हम देखते हैं advantages of circuit breaker over fuse. So सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि सर्किट ब्रेकर को हमें बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता, फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है। फ्यूज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, जबकि जो अब जैसे हमारे घर में भी सर्किट ब्रेकर लगा होता है तो व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज और द करंट तो जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाता है। So what we do when the current just gets normal, so we just turn it on again. So this is how it works. ठीक है, so fuse needs to be replaced while circuit breaker can be used again. Okay. दूसरा हमारे पास बेटा ये एडवांटेज है कि सर्किट ब्रेकर जो है इट इज मोर एफिशिएंट, और यू कैन से कि जो सर्किट ब्रेकर है इट्स फास्टर। ओके, सर्किट ब्रेकर इज फास्टर और एफिशिएंट। ओके, सो जो सर्किट ब्रेकर है वो जल्दी आपके पास क्या कहते हैं ट्रिप कर सकता है, ठीक है, वो जल्दी ट्रिप कर जाता है, जबकि फ्यूज जो है इट इज लेस एफिशिएंट देन द सर्किट ब्रेकर। So these are actually all the applications that we need to
No. Okay. Now let's just start with the next topic, which is about the magnetic force. Okay. If anyone has any confusion, beta, please feel free to ask. किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो. Okay, now let's just talk about beta magnetic force. So आपके पास we have magnetic poles. So these are the magnetic poles. So this is a north pole. And we have a south pole. Okay. So let's say we place a conductor between these magnetic poles. So we have this conductor which is placed between the magnetic poles. And what we do, we connect it to a battery. Here's the switch. Okay. So आपके पास एक conductor है. So this is a conductor. And this conductor has been placed inside a magnetic field. Magnetic field is always traveling from north towards the south pole. So this is the direction of your magnetic field. I am denoting it with M. Acha. Now the current flows from positive towards the negative terminal. So this is the positive terminal. The moment you turn on the switch, so the current starts flowing from positive towards the negative terminal. So this is the path of current. Okay? Acha. Now please remember, beta, if there is a current carrying conductor placed inside a magnetic field, it will always experience a magnetic force. But on one condition, if they both are perpendicular to each other. So let's say if the magnetic field and the current is perpendicular to each other, it will experience a magnetic force. Okay, and how can we determine the direction of the magnetic force using Fleming's left hand rule? Okay, so we use the Fleming's left hand rule to find out the direction of this magnetic force. So this is the direction of the magnetic force. So I'll write it down. A current carrying conductor placed perpendicular to magnetic field experiences a magnetic force. Experiences a magnetic force. ठीक है? Use Fleming's left hand rule to determine the direction of magnetic field. To determine direction of magnetic field. Now, what is Fleming's left hand rule? ठीक है? So, let's say this is the thumb. That is your index finger. And that is your
second finger, and the rest of the two fingers have been curled. So let's say this is the hand. ये thumb है. This is the index finger. And this is your uh, second finger. अच्छा बेटा जो please remember FMC, father, mother, child. Okay. Now this is F. Thumb indicates force, which is F, and index finger indicates magnetic field, which we denoted with M. And the third one, which is the second finger, gives us the direction of the current, which is C. So father, mother, and child. Okay, now please remember that this is your index finger, so this end is the north, and the other end is the south. So this end is the north, and because the magnetic field line is always traveling from north to south, and this is the direction of the current through the index finger. Now please remember K F M C, force, magnetic field, and current. And if magnetic field and current is perpendicular to each other, as a resultant, magnetic force is produced. Or let's say if there is a force and a magnetic field, so the current will be produced. Okay? So if we use the Fleming's left hand rule on this side, so we can clearly see that the index finger it travels from north towards the south, और जो आपके पास current है, current is sort of coming out of the page, ठीक है? So this is the direction of the current, और बाकी की ये दो fingers आपकी वो curled है नीचे से, and this is your thumb. So ये आपके पास thumb है, ठीक है? So this is the hand basically. तो ये आपके पास force, this is the magnetic field, and this is your current. Okay? So this is how you're going to मतलब put your hand and see कि कौन सा force है, कौन सी magnetic field और कौन सा current है. So magnetic field is traveling from north towards the south. इससे हमें ये पता चल रहा है कि the force on this conductor is in the upward direction. ठीक है? अच्छा, now let's just talk about the application, which is very important. That is the DC motor. So let's just talk about that. I hope मतलब it's clear. जी. Okay, now let's just talk about the DC motor. अच्छा, so बेटा DC motor की एग्जाम के लिए we need to know how to draw its diagram. We have two magnetic poles. These are the two magnetic poles. A north and a south pole. We will place a rectangular coil between them. So this is a rectangular coil. Acha. And we have these are called as split ring commutators. ये जो half rings है, they are basically the split ring commutators.
We have a battery or a DC source. We call it a DC motor because we supply it DC current. हम ऐसे DC AC current नहीं दे सकते. ठीक है? अच्छा, so that these two are the split ring commutators. अच्छा, एग्जाम में उसने स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स का भी पूछना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स. तो आप ये प्लीज ये याद रखो बेटा कि टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन. डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन. ओके, सो ये 1 मार्क का अगर आपसे पूछेगा ना तो ये लिखना है आपने कि टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन. ये जो दूसरे वाला है, ये जो स्मॉल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस का पर्पस होता है टू प्रिवेंट द वायर्स फ्रॉम गेटिंग tangled. To prevent wires from getting tangled, and the other purpose is to reduce friction between commutators and the coils. Friction between commutators and coil. अच्छा, आएगा ये भी 1 मार्क का, बट हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम ये लिखेंगे कि इट प्रिवेंट्स द वायर फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड. ओके, अच्छा, अब हम ये देखते हैं बेटा कि व्हाट इज मतलब हाउ डज अ डीसी मोटर वर्क्स. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट्स वर्किंग नाउ. देखो, सबसे पहले when we turn on the switch, the current will start to flow from positive to negative terminal. Let me mark these as A, B, C, and D. Okay? So, अच्छा, 1 मार्क आपको इस बात का मिलेगा कि current flows from positive to negative terminal. ठीक है, अगर वो आपसे इसकी वर्किंग पूछता है तो आपने सबसे पहली बात उसे यही बतानी है कि जो करंट है इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये आपके पास करंट है. लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल. सो ये सी से मैंने इसको डिनोट कर दिया करंट की डायरेक्शन को. The magnetic field travels from north to south. So this is the direction of the magnetic field as well. Now we will write K current and magnetic field are perpendicular. इनके परपेंडिकुलर होने से क्या फर्क पड़ता है कि फोर्स प्रोड्यूस होगी. फोर्स प्रोड्यूस्ड of equal magnitude and opposite direction on sides AB and CD. On sides AB and CD
ऑफ ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बताना है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट इन मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। तो इससे ये होगा कि फोर्स प्रोड्यूस होगी which is equal in magnitude and opposite in direction on sides AB and CD। ये बता दिया। So this is actually one point। तीसरी बात मैं इसमें ये कर देता हूं कि how can we determine the direction of force? Use Fleming's left hand rule to determine direction of, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब अगर मैं honestly if we just use the Fleming's left hand rule, so the force on the right side of the coil is upwards and on the other side is downwards। तो मैंने यही बात की ना कि फोर्स ए बी और सी डी साइड पर प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स इक्वल होगी मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इन दो फोर्सेस की वजह से क्या होगा बेटा कि द कॉइल रोटेट्स। ठीक है, सो यू कैन जस्ट सिंपली, अगर उसने डायरेक्शन मांगी होगी तो डायरेक्शन के भी मार्क्स होंगे कि फोर्स ऑन ए बी is downwards and on CD is upwards। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा या मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो अब आप उसको ये बता दो कि टॉर्क या फिर आप कह लो कि मोमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन कॉइल and it rotates anti-clockwise and it rotates anti-clockwise। अच्छा, अब बेटा आप एक चीज देखो, जब ये रोटेट होगा ना, मतलब 180 डिग्रीज की रोटेशन ये अपनी कॉइल कंप्लीट कर लेता है, तो आपके पास जो ये साइड सी डी है कॉइल की, दैट विल बी ऑन द लेफ्ट एंड द साइड ए बी विल बी ऑन द राइट। अब देखो पहले सीडी में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ठीक है, तो अगर बाद में भी इधर डाउनवर्ड्स रहती है तो इसमें फोर्स अपवर्ड्स होगी और जो कॉइल है ना वो हाफ रोटेट करेगा और दोबारा, मतलब हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंड दोबारा क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट व्हाट वी डू, ठीक है, कि उसकी रोटेशन एक ही डायरेक्शन में रहे, वी यूज अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर फॉर दैट पर्पस। वो क्या करते हैं कि जब साइड सीडी लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो इसमें करंट की डायरेक्शन पहले अगर डाउनवर्ड्स थी तो अब इधर वो करंट की डायरेक्शन को अपवर्ड्स कर देगा ताकि जो कॉइल है इट कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, टू कीप कॉइल rotating in same direction। So this is the purpose of split ring commutator। अब देखो ये जो split rings नजर आ रहे हैं ना, ये मूव कर रहे होते हैं बेटा, ये जैसे जैसे कॉइल घूमता है ये रिंग्स भी उसके साथ साथ घूमते हैं। तो जब ये साइड सीधी आ जाती है तो ये राइट वाला स्प्लिट रिंग उधर चला जाता है और लेफ्ट वाला राइट पर। ठीक है, so this is how basically a DC motor works। तो अगर इवन वो स्टिल अगर 1 मार्क के लिए पूछता है तो आप ही दोनों बातें लिख दो। ठीक है, सो वी जस्ट स्कोर मैक्सिमम मार्क्स थ्रू दैट, इसी वजह से। ओके, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द लाउड स्पीकर। ठीक है, कि हाउ इट वर्क्स मैं आपको जल्दी से दोबारा बता देता हूँ।
सबसे पहली चीज डीसी मोटर में कि current flows from positive to negative. Current and magnetic field is perpendicular to each other. Because of that, a force is produced on sides AB and CD. Acha, there will be no force on sides BC and AD because देखो BC में current की direction is this और मैग्नेटिक फील्ड की ये है तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल इसीलिए साइड्स बीसी और एडी पे कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती ठीक है सो वी विल से नो फोर्स ऑन साइड्स बीसी एंड एडी एज करंट एंड magnetic field is parallel बेटा फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए दिस इज नेसेसरी कि जो करंट और आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे आर नॉट देन देयर विल बी नो फोर्स ओके okay now let's just quickly talk about the moving coil loudspeaker and that will मतलब हमारा मेजर सेक्शन कुछ कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा ठीक है okay so let's just talk about a loudspeaker जी I hope it's clear to everyone if any one of you have any confusion please feel free to ask me beta and you can also just simply drop me a text on the WhatsApp. I'll respond back to you. Okay, now let's see moving coil loudspeaker. So again, इसकी डायग्राम हमें पता होनी चाहिए अच्छा मतलब इसकी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी नहीं आनी चाहिए ठीक है डायग्राम विल बी गिवन इसकी वर्किंग हमें पता होनी चाहिए कि हाउ इट वर्क्स ये ठीक है अच्छा अब दरम्यान में भी हैव मैग्नेटिक पोल टॉप पे भी हैव अ मैग्नेटिक पोल और यहाँ पे आपके पास कॉइल ऑफ वायर है so this is a coil of wire which is connected to the AC supply okay the loudspeaker है it works on AC supply please remember ठीक है so this is also a symbol of AC supply okay ठीक है this is coil of wire these are the magnetic poles this is the north pole and this is a paper cone अच्छा अब इसकी वर्किंग भी हमें पता होनी चाहिए सो बेटा मूविंग कॉइल लाउडस्पीकर जो है आपके पास सबसे पहले वी पास दी एसी करंट अब जब आप इसको करंट दोगे ना ये कॉइल तो अब आपके पास वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम ठीक है अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उससे ये होगा कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉइल ठीक है सो लेट्स से जो फोर्स की शुरू में डायरेक्शन है वो पहले राइट है इस फोर्स की वजह से आपके पास जो ये पेपर कोन है इट मूव्स आउटवर्ड्स ये बाहर की तरफ मूव होगी तो जब ये पेपर कोन मूव होगी तो इसकी वजह से
जो एयर के मॉलिक्यूल्स है दे विल बी कंप्रेस्ड. अब सिंस इट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एन ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही ये है कि जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है. तो लेट्स से व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइकिल, तो व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कॉइल विल रिवर्स, और यहाँ पे अब force will be in the opposite direction and the paper cone just moves back. उससे क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स में गैप होगा और उस गैप की वजह से we will have rarefactions. Okay, so we will have rarefactions because of that. Okay, so ये when there is a series of compression and rarefaction, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि sound is produced. So this is how actually it works. ठीक है, so these are the rarefactions. Rarefactions की वैसे 1 mark की definition आ जाती होती है कि it's a less dense region in which molecules are far apart, in which molecules are far apart. And जो ये green वाला है, this is a dense region. Oh, so this is a compression. Compression क्या होता है? Compression is basically a dense region in which molecules are close. Now let's just talk about the working of it. So we will write कि pass the AC current. So what we do, pass AC current through coil. Acha, when you pass the AC current through coil placed between magnetic field. ठीक है, सो अब आप ये कहोगे कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन कॉइल. ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of force constantly changing. Paper cone moves left and right, producing compressions and rarefactions. ठीक है, compressions and rarefactions produced. Hence, sound is produced. So this is how actually the loudspeaker works. आप AC करंट देते हो कॉइल्स में, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, उससे क्या होगा, उससे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी. फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है क्योंकि इट इज एन AC करंट, और उससे यह है कि जो पेपर कोन है वो लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा, जिससे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होंगे इन द एयर मॉलिक्यूल्स. कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इन एयर मॉलिक्यूल्स is produced, hence the sound is
produced. Compression is a dense region in which molecules are close. Rarefaction is a less dense region in which molecules are far apart. So I hope it's clear to everyone. If you have any confusion, Vita, please feel free to ask.